यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम। क्या हाल है भाई? भाई कल बड़ा खतरनाक सपोर्ट दिखाया है भाइयों ने। हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत खतरनाक, मतलब न्यू सब्सक्राइबर है और भाई खतरनाक सपोर्ट दिखाया है भाई। आज भी वही सपोर्ट चाहिए, लेकिन आज थोड़ी स्ट्रीम खींचेंगे, लंबी करेंगे 6 या 7 बजे तक इंशाल्लाह। 6 से 7 बजे तक स्ट्रीम होगी होगी, ठीक है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। अजान हो रही है तो थोड़ा ब्रेक, अजान ब्रेक, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अजान ब्रेक हो गई। बिग फैन ब्रो। डम ब्लैंड पार्क। वेलकम टू द स्ट्रीम ब्लैंड पार्क। यार सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हुआ, और लाइक कर दो, ठीक है। आज टाइटल से तो समझ गए होगे कि आज चैलेंज चैलेंज होने वाला है, लेकिन कौन सा होने वाला है ये मैं खुद बता देता हूँ। पहला चैलेंज तो होने वाला है, स्ट्रीम लंबी खींचेंगे, अगर नहीं खींची तो फिर खैर है, कोई नहीं। और दूसरा चैलेंज मेरा ये है कि मतलब आप चैट में मुझे जो भी बताएंगे मैं वो करूँगा गेम में, और वो नहीं हो पाया मैं करता रहा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिसने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हुआ है जल्दी जल्दी कर दो। हम 300 सब्सक्राइबर करवाने हैं, आपने आपने ही करवाने हैं, और कौन है भाई जान। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड।
अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। जो हैं भाई, असद भाई ने सब्सक्राइब किया है, बेहतरीन हो गया है। ठीक है, एक कॉल अटेंड कर रहा था इस वजह से। वहीद भाई आए हैं। इब्राहिम भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, आई एम बैक। ओके ब्रो, आई एम बैक। क्या ही बात है इब्राहिम भाई, आज तो हम चैलेंज भी करने वाले हैं और ऊपर से हम खींचने वाले हैं आज स्ट्रीम को, अगर नेट ने साथ दिया तो, नहीं तो फिर एल लग जाएंगे हमारे। ठीक है, कर दिया भाई मैं असद। हाँ अच्छा, असद भाई वो गेम वाले, ठीक है। ज़ल्मी 360 जालिम स्पाइसी किंग, आई लव यू। ओके ओके, लव यू टू मेरी जान। स्पाइसी क्या हाल है? ठीक 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 ठीक। ओके जी, ओके हो गया। अच्छा जी, गेम लगाते हैं, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मैं आऊँ? हाँ, अगर आपने अपडेट कर लिया तो आप आ जाए, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आ जाए। मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाए। ये भाई जालिम भाई क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा, ये मेरा आउटफिट ये रहा। ठीक है, बैग चेंज करते हैं यार, आज बैग थोड़ा मेरे को घटिया लग रहा है, मेरे को थोड़ा। ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मैं ये यूज़ करूँगा। थोड़ा ये मेरे को मज़े वाला लग रहा है आज। ओके हो गया भाई। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूरी है, ठीक है। लाइक 3 लाइक हो गए, 5 लाइक का एम है, जल्दी कर लो। क्या बोल रहे हैं भाई चैट पे? काम से बाहर आया हूँ। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं जालिम, जब घर चला जाए मुझे मतलब कि गेम में डायरेक्ट आ जाइए। मैं गेम में ही होऊंगा अभी 7-8 बजे तक, तो कहीं नहीं जाने वाला, गेम में ही होना है। अब देखते हैं आप लोग कितना साथ देते हो, कितने व्यूवर आते हैं, कितना साथ देते हैं लोग। भाई आज तो मेरे को 240 सब्सक्राइबर करा के जाना है। मैं इस स्ट्रीम पे 240 से पहले नहीं उठने वाला, मैं पहले वो भाई ऐसा नहीं होता ना। 1v1 के बैग देखो। अच्छा अच्छा, लेवल 1 का बैग देखो। कौन सा लेवल 1 का बैग? लेवल 1, ये भी अच्छा है वैसे। ठीक है, ओके है। नहीं, मेरे को ये मज़ा आ रहा है भाई, यही पसंद है मुझे। ठीक है। अच्छा जी, वो इब्राहिम भाई आ रहे हैं। इब्राहिम भाई जल्दी आ जाएं, स्ट्रीम देख रहे हैं तो जल्दी आ जाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। ये कौन सा इवेंट है यार? मैं कल से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया इस इवेंट को। अच्छा जी, अबे यार ये तो परमानेंट है ही नहीं, हाड़ में। परमानेंट होता तो चीज़ हम लेते यार, वैसे परमानेंट नहीं है तो फ़ायदा क्या? बताओ मुझे, फ़ायदा क्या फिर? अच्छा, मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? अभी नहीं? अच्छा ठीक है, बाद में। ओके हो गया। अच्छा, मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? ऐसे नहीं कि गेम की आवाज़ ज़्यादा, मेरी आवाज़ कम हो, आ सकता है। अच्छा जी, क्या लगाएं पहले, क्या लगाएं? लिविक मारते हैं थोड़ा, लिविक लगाते हैं, लिविक। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आ रहे हो आप इब्राहिम भाई? यार इमोजी ऐसे ना भेजो यार, मेरे को होता है। हाँ आ सकते हो यार, कोई मसला थोड़ी ना मैंने करना किया आपको। आ सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, आ सकता हूँ, आ सकते हो ब्रो। आ जाओ ब्रो, कोई इशू ही नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हाँ सही आ रही है, ठीक है। अच्छा वो अपना, आप आ रहे हो ब्रो? ये तो बता दो मुझे, या मैं गेम स्टार्ट करूँ? अच्छा, क्लेन के क्या हालात हैं देखें आप। क्लेन के हालात हैं, लेवल 5 हुआ नहीं वो अभी तक। हाँ चैट में आईडी लिख दो मैं। अच्छा ठीक, लेवल 4 हुआ है यार। जो भी आ रहे हैं वेलकम टू द स्ट्रीम, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आप चैट में आईडी लिख, नंबर लिख दो, मेरे को भी अपने साथ खिलाओ। अबे आ जाओ असद भाई, यार आप तो एक्टिंग कर रहे हो जैसे पहली बार मेरे को देखा है। अच्छा जी, मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ। यार मैं अपनी आईडी कैसे लिखूँ मुझे बताओ, एक सेकंड सब्र करो, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल मैं जालिम की आईडी से खेल रहा हूँ।
मेरी कोई ऑफिशियल आईडी समझो है ही नहीं। कभी किस आईडी से आता हूँ, कभी किस आईडी से। एक ऑफिशियल आईडी थी वो, उसके तो एल लग गए। ठीक है, आईडी एंड कॉपी। अबे कॉपी नहीं, पेस्ट। अबे यार ये तो बहुत बकचोद में है भाई। अच्छा ऐसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे चैट में मैं पेस्ट कर देता हूँ। जिसको भी आना रिक्वेस्ट भेज दूँ एक बार। ठीक है, ये आईडी नंबर मैंने लिख दिया। नो, अच्छा ठीक है, गेम स्टार्ट कर। अच्छा असद भाई आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, जल्दी बता दो यार स्ट्रीम में, जल्दी बता दो। आ रहे तो सही है, मज़ा आएगा, थोड़ा खेलेंगे। ओके ओके यार, आज कितने स्ट्रीम कर पाऊँगा वैसे? मैं 4 घंटे से ज़्यादा स्ट्रीम कभी नहीं की मैंने, 4 घंटे से ज़्यादा। तो आज मैं अभी स्टार्ट की है, समझो 2 3 4 7 घंटे। यार 7 घंटे या 6 घंटे से 6 घंटे निकाल, या 7 घंटे अपने काम का नहीं है। अगर 7 घंटे निकाल पाए तो, क्योंकि मोबाइल मेरा है ना थोड़ा खच्चर है। अगर उसने साथ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो एल लग जाएंगे, समझा करो। ठीक है, बाकी नेट का टेंशन नहीं है, नेट 24 घंटे ऑन है आपके भाई का, अपना है ना ऑन हो। अच्छा रात को होगे, ठीक है, ठीक है सब, ठीक है। बाकी लिंक विंक शेयर कर दो सबको ग्रुप्स में, हर जगह, ताकि लोगों को पता चले बुकिंग हो रही है। और बस ये अच्छा मैं पहले बोल दूं, मैं मतलब और हाँ, जिस चीज़ को चैलेंजेस देने मुझे, मतलब कि ये शॉटगन से जो भी चैलेंज चैट में लिख दो ना, ठीक है, फिर हम उस चैलेंज को करेंगे। आज इसलिए तो मैंने टाइटल लगाया कि चैलेंजेस करेंगे आज। गेम भी करेंगे लेकिन आज थोड़ा अलग से करेंगे चैलेंजेस भी, ठीक है। तो मुझे सजेस्ट करते रहना चैलेंजेस, ठीक है। बहुत खतरनाक ही मरा हूँ मैं, बहुत ही खतरनाक, इसलिए मैं डुओ खेलता हूँ यार। मुझे पता है ना, मेरे लग जाने हैं, अपने एल लग के जाना है, ठीक है।
बंदा मजे से ऊपर जा रहा था। कस्टमर अवेलेबल राइट। अबे भाई अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर बाद। ओके कस्टमर। अबे भाई नाइट बोर्ड भाई, कस्टम रूम नहीं है, बाद में होंगे, बाद में है। अभी सिर्फ गेम होगा, फिर बाद में कस्टम भी होंगे। अच्छा कस्टम भी होने हैं। अच्छा ये कस्टम क्या बोलते, अभी कस्टम की रेट अभी तक गई नहीं है। ये तो आज हम निकालते, थोड़ा क्रिएट ओपनिंग मारते। कोई नहीं, खैर लेट्स बिगिन ब्रो। लाइक एंड सब्सक्राइब याद है ना, बस याद रखना। Welcome to PUBG Mobile. It is showtime! We will be taking off soon. Be prepared.
यार भाई मुझे लगता है कि मुझे अच्छी टीममेट की ज़रूरत है। जो रैंडम आ रहे हैं ना वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। साथ होता तो बंदा कोई फायर मार दे वगैरह। मुझे अच्छे टीममेट की ज़रूरत है। अब बंदे एक काम से गया हुआ है, कहाँ गया? मैं आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी आजा ज़ालिम है यार, मुझे बंदे की ज़रूरत है। यकीन मान, अच्छा खासा कसम से एक को नॉक कर दिया, दूसरे को टीममेट टीममेट होता तो वो कर लेता। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई, मैं हूं ना। आजा यार, आजा यार, जल्दी आजा, जल्दी आजा भाई, जल्दी। अबे ये दोनों इमोट कैसे हैं यार? भाई बिल्ली कितनी क्यूट है यार, माशाल्लाह। जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ। हेलो जी, जान ले बंदा चाहिए खेलने के लिए। हमने एक ऐसी फिक्र। ये बनते हैं। Please join me. Make this more awkward. Welcome to PUBG Mobile. हेलो ब्रो, बिग फैन। हेलो सर बिग फैन सर। अरे सर Good आउटफिट luck, क्या दे mates. रहे Good हो luck, सर बिग mates. फैन? सर मुझे मार के ले लेना आउटफिट। हेलो, मुझे मार के आउटफिट ले लेना। म्यूजिशियन पे मुझे मार के आउटफिट ले लो। Okay. लो, म्यूजिशियन पे आके मुझे मार के आउटफिट ले लो। We will be taking off आ जाओ। soon. Be prepared. क्या? अच्छा जी, तो कैंप करके भी कर सकते हैं ना? Okay. या मैं तो ये कैंपर दिख रहा हूँ। Excellent work. मैंने बंदों को म्यूजिशियन को बोला और जा कहाँ पे रहूंगे थे। कोशिश करते हैं विन करने की। जैसे मुझे पता है हम दोनों ही बोलते हैं। वो सामने बंदे उतरे। अबे कौन सी लगाई है तूने? नॉर्मल लगाई है? नहीं, मेरी पावर सेलेक्ट नहीं है। Wait.
ऑटोमेटिक क्यों ऑफ करते हो तुम? आजा, आगे लड़ाई हो रही है, निकलते हैं, मारते हैं हम लोग। Okay. Okay. इसको अबे कोई इधर नहीं आओ। No. No. आजा इधर आ, इधर आ। उस पर हम खोले हैं तो। अच्छा वेट करते हैं, बंदे निकलेंगे। मेरे पास भी कोई अच्छा स्कोप पास नहीं है ना। ओपन में पूरा आ जाए ना फिर मारना, ठीक है ना? ये Watch इसके अंदर out. बंदा ना Watch out. मारना सिर्फ, और पूरा ही फिनिश करना। हो रहा है एक, वो देख निकल रहे हैं। अब मार, अब मार। Excellent work. Excellent work. दो ही थे। Excellent work. Excellent work. हमने सेंसिटिविटी मैंने इसलिए बनाई भी नहीं है ना। Excellent work. एकदम चाहिए या बैरल? मैंने क्या करना है? वो तेरे व्हाट्सएप से मैसेज आ रहे हैं। आवाज दे कितनी प्यारी लगी हुई है मैंने व्हाट्सएप की मैसेज की। Excellent work. Excellent work. चलो आ जाओ। Okay. Okay. यार मैंने मुझे गेम नहीं खेलनी थी आज, Let's go. Let's go. लेकिन क्या करें, Excellent work. Excellent work. तेरी वजह से आई हूँ मैं। आज स्कूल भी नहीं गया ना, वो मतलब थोड़ा काम से बाहर गया था ना, तो इसलिए 11:30 बजे गया था, अभी आया हूँ। Okay. Okay. और मोबाइल भी मैं भूल गया चार्ज पे रखना। मोबाइल भी चार्ज नहीं Thank है, you. और अब Thank चार्ज you. थोड़ी देर में चार्ज पे लगा के गेम खेलूंगा। तो सामने Watch बंदा out. Watch out. यहाँ Wait. से दिख रहा है, लेकिन मारना नहीं है यार। कोई डीपी है यार अमीर पास। मेरा एक स्कोप से नहीं चल रहा। डीपी पे कोई बच्चा है। यहाँ से आ। वो ओपन में जा रहा है। ये देखिए, Help. ये दिख ही नहीं रहा। Excellent work. कवर में आना, इधर ही रुक। क्लोज आ जाए बंदे।
Awesome. Awesome. क्लोज आ गया। Watch out. हील कर Watch रहा है out. वहाँ पे। नेट फेंक ना। क्या कर रहा है? ऐसे नहीं फेंक रही है, ऐसे क्यों फेंक रहा है? आजकल मैं संभाल के रहेंगे। अमी आए ता हीरो ने चोली होने। सॉरी यार इब्राहिम भाई, वन अटेम्प्ट। एक और मौका दीजिए यार, कसमें यार बहुत गंदा मरे। एक और अटेम्प्ट दीजिए ब्लैडी, हम आपको चिकन दिखा के दिखाएंगे। रूल्स भी बता दीजिए कि केस के रूल से मतलब कि क्या उठाओ, क्या चाहिए, और अपना क्या बोलते हैं, सब कुछ बताओ कि भाई चिकन कैंपिंग करके करें या रस्ट करके करें, जो आप बताएंगे। लेकिन उसमें अटेम्प्ट भी आप बताइएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा थैंक यू यार, थैंक यू। यार मेरे को यकीन मानो, मेरे को ये पूरा करना था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मजाक कर रहा हूँ, चलो। वन अटेम्प्ट, वन अटेम्प्ट और कर लेते हैं, ठीक है। ओके 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 हो गया। क्लैन कॉइन क्या? 9,008। अच्छा आपके क्लैन कॉइन इतने हैं? ये जालिम के 9,008। अच्छा मेरे बोल रहे हो, ठीक ठीक। हाँ मेरे तो हैं यार। स्ट्रीम डिले तो नहीं आ रही? मुझे लग रहा है स्ट्रीम डिले हो रही तूने लड़की को गलती कर दी, शर्म आनी चाहिए तुझे। है। क्या करें भाई। ठीक है, एक और अटेम्प्ट करते हैं। मैं असल में बोल तो गेम सही नहीं खेल पाता, इस वजह से बोल नहीं पाऊंगा। तो आपको डबल आवाज़ आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी, एक आवाज़ आएगी तो ठीक है, ठीक है। तो आप एंजॉय करें। Welcome to PUBG Mobile. Good luck, mates. We will be taking off soon. Be prepared. ओए इसका दूसरी पे बना दूँ। तेरी आओ मेरे गाड़ी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे सब्सक्राइबर जो बोलेंगे हम आज वो करेंगे यार। और बताओ यार सर्दी, अब और बताओ। अच्छा बंदे आ रहे हैं। डबल आवाज़ में इसलिए बोल रहा था कि आपको मसला ना करे यार। इसने फिर अबे यार ये क्या यार, क्या है बोलो ये क्या था यार क्या है यार, क्या है मेरे को गुस्सा क्या है। अरे यार किधर उतारा मैं, असल में बात बात में मेरे को पता ही नहीं चला यार।
चीटर बनाते चिकन किस्मत बुरी चाहिए। अच्छा चिकन चाहिए। हाँ यार, किस्मत बहुत ज्यादा ही खतरनाक बुरी है यार, यकीन मानो बेहतरीन। कोई नहीं हो जाता है यार, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े लोगों में छोटे छोटे शेरों की बात है। अच्छा, डबल कर दिया यार। यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो जो भी न्यू है, न्यू, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। It is showtime. थैंक यू ब्रो यार। 231 है ना, मैं सबसे 232 31, हाँ 232 है, ठीक है। 232। चलो अब 300 सब्सक्राइबर तो कराना है। चलो आज 240 तो करा दो इस स्ट्रीम में। तो संडे स्ट्रीम में होगी We will be taking off soon. फ्राइडे को स्ट्रीम में देखते भाई। यहाँ से अगर जिंदा निकल तो चिकन निकलेगा हमारा। Excellent work. क्या बात कर दी इसने मेरी, क्या बात करते हैं। अच्छा जी चिकन उसके मरेंगे चिकन निकला तो हमारा नहीं तो। एक तो मेरा पता नहीं क्या है तो बंदा है वो, मैं उसके पास जा। ऊपर भी बंदे हैं यार गेम कितनी ज्यादा चल रही है कसम से। मेरी बेटा थैंक यू ब्रो। 2 मिनट आ जाना भाई देख रही है। चिकन हो जाएगा। चिकन दे दे। हो जाएगा यार, जिस तरह से तभी जोश में आए हुए ना, आज कर देगा, करवा देगा। वो तो नहीं कर सकता लेकिन ये करके दे देगा। M4 पड़ी हुई है भाई। I got supplies. Because bro, no sir, I'm noob bro, I'm noob। जालिम इस प्रो जो मेरे साथ खेल रहा है, वाइट डेविल जालिम, एक ही बात। दिस इज प्रो, आई एम नो। I got supplies. भाई मैं तेरे को सप्लाई करूँ, तुझे सप्लाई कर रहा हूँ। वो कर रहा है शॉटगन चलाने का।
चला भाई चला। बंदे कहें यू आर अल्ट्रा प्रो। ओके ब्रो, अल्ट्रा प्रो। हाँ अल्ट्रा प्रो। यकीन मानो 2 से 3 साल हो गए पबजी खेलते, लेकिन आज तक गेम नहीं खेला। कभी कभी रिफ्लेक्स मार देता हूँ, कभी कभी मैं बिल्कुल लो भी बन जाता हूँ, बेहतरीन वाला लो। कैंपिंग तो अलाउ है ना इब्राहिम भाई, कैंपिंग तो अलाउ है ना, मतलब नहीं है। कैंपिंग करोगे तो फिर चिकन नहीं हो पाएगा। इंशाल्लाह आपका हम चैलेंज पूरा करके छोड़ेंगे। जब हमारे सब्सक्राइबर बोलेगा वो हम चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसकी वीडियो भी एडिट होके आएगी। भाई ये फिर उधर जा रहा है, फिर ये मरेगा यार, अजीब बंदा है ये। Help! इधर आ जा भाई, कवर में मार दिया राम ने। वो बैठा हुआ Watch सामने। out! Watch out! Watch out! सामने बैठा Watch हुआ। out! Watch out! Watch out! फर्स्ट एड दे दे, फर्स्ट एड वो आ रहा है रिवाइव देने। रश कर आजा। क्या मेरा है अच्छा नहीं। Excellent work! हंसी आ रही है मुझे। Excellent work! Excellent work! बंदा लगा लेते हैं। Watch सामने घर out! में। Watch out! ये सामने घर में या ये वाले Watch ये out! घर में? Watch out! वो भी नेट लेकर है क्या? क्या वो सामने ही है? ये भी घर Watch में। out! Watch out! Watch out! Watch out! नीचे कूदा है। ऊपर ही गया। नेट है तो नेट फेंकना ऊपर। Wait! Wait! ऊपर नेट फेंक रहा है। आजा। Excellent work! Excellent work! अंदर को। ओए सिंधी बॉय, लो सिंधी भाई हो गया है। लो सिंधी, आजा भैया, हम सिंधी को नहीं मारते। अबे भाग रहा है। Excellent work! शर्म नहीं जो सिंधी है तो भाई। शर्म आता है तो कहाँ जाए? नालो करता है ये जो नक कटा है ये। Excellent work! Excellent work! Excellent work! Excellent work! गाड़ी
वेट कर, इसको नहीं पता हम यहाँ पे ये आएगा रिकॉल करने अपनी टीम में। चला गया Okay. Okay. चलाइए Marked a location. बंदा सामने घर में घुसा। ये मैसेज इग्नोर करना ठीक है ना, ऐसे साउंड आते रहेंगे आपको। Watch out! Watch out! बंदे जा रहे हैं आगे आगे, ये लोग आगे इधर से। मैं तो मशीन गन की स्किन डाउनलोड कर लिया। Watch out! Watch out! जरा इसके पीछे ये भी मारना, फिर ओपन में जा रहा है भाई, क्या कर रहा है? दूसरा टीम में इसको पता नहीं है। Marked a location. Location. चल यहाँ पे चल रखते। Let's go! Watch out! Watch out! अबे तेरी माइक बनता है, ऊपर में ना जाना, ठीक है? ध्यान से खेल। Enemies ahead! Watch out! Excellent work! Awesome! लास्ट बुलेट बची है मेरी, लास्ट बुलेट वो पे एक किलो बची है। रीलोड इसके बाद करता हूँ तो रिवाइव के बंदे आएंगे। I'm really sorry. मैं हवा से कोई बंदे को मैंने मार दिया। वो Watch out! Watch out! चलो चिकन चाहिए था ना, चिकन भी हो गया। देख लो भाई प्रेम भाई, देख रहे हो? We're the best. We're the best. We're the best. We're the best. भाई ने क्या यहाँ पे अब तू
Watch out! Watch out! Watch out! यहाँ पे बैठ गया। नहीं इससे Watch नहीं, out! इसके ऊपर Watch है। out! Watch out! इसके ऊपर हाँ हाँ, बैठ गया। और देखिए, थोड़ा आगे हो जा, थोड़ा आगे हो जा, फिर से दिख नहीं फिर से दिख नहीं रहा। रहा। यार वो यार, अबे भाई ये क्या कर रहा अबे है? किसका ओपी इन द चैट कर दे भाई, स्पैम कर दो इब्राहिम भाई, ओपी इन द चैट कर दो। नाइट बोट भाड़ में जाए, ओपी इन द चैट कर दो यार। क्या ये बात है भाई, चिकन निकाल लिया भाई ओपी बोल के। दूसरा चैलेंज तैयार रखो, दूसरा चैलेंज तैयार रखो जानी, दूसरा चैलेंज ये तो हो गया। अब दूसरा चैलेंज बताओ, दूसरा जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो इसी बात। चल चिकन निकल गया, अब ऊपर में रूम खेलते हैं। हम्म, 18% चार्ज है मेरी। तो हम इसको कच्चा बनाते हैं। ये हाँ, माजरत के साथ वो जो स्पैमिंग मतलब कि वो जो बोल रहा था ना, सॉरी यार। उसको मैंने कर दिया थोड़ा काम उसका खत्म। इब्राहिम भाई दूसरा चैलेंज क्या आप बताएं इसका? आपका दूसरा चैलेंज क्या है आप बताएं मुझे। यू आर बताएंगे मुझे। अरे हाँ, वो तो ले लूँ उसको, बताते हैं मुझे ये भूल जाता है, ये जरूरी है ना। नहीं अच्छा जी इब्राहिम भाई, आप चैलेंज जब तक बताते हैं तब गेम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये चार्ज पे लगाने गया उसके बाद स्ट्रीम ब्रेक होगा, रूम्स होंगे कस्टम रूम्स, और रिक्वायरमेंट भी डाल दूंगा। फिलहाल तो कस्टम रूम होता है, व्यूवर्स नहीं है तो कोई नहीं आएगा। फिलहाल मैं रिक्वायरमेंट डाल के रूम्स बताऊंगा और खाना वाना खाने जाऊंगा, इस वजह से मैं रूम्स बनाऊंगा। तो एंजॉय करना है। फ्री नो मोर चैलेंज। क्यों सर जी, क्या हो गया अरे सर, क्या हो गया? फ्री नो मोर चैलेंज। बंदे को बुला लेते हैं, क्या ही बात है यार, इसे कैसे आप फ्री कर सकते हैं चैलेंज से सर जी? हमने स्ट्रीम खींचनी है। बच्ची को बुला ले। हाँ एक सेकेंड ना, अच्छा जी ठीक है। क्या बोल रहे बेगम? इंसान ही है हम, इंसानों को जरूरत होती है ना।
नॉर्मल खेलो। अच्छा जी, नॉर्मल खेलते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे तो समझता नहीं। जो आपकी मर्जी। रूम खेलो। क्या खाक ले जग रूम देगा खेलते तू। हैं, चलो आ जाओ। रूम 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 अच्छा चलो नाम ले सकते चलो रूम का चैलेंज कोई बताओ। पैन रूम। अरे यार शिट, अबे लॉबी कर अब लॉबी कर। लिविक लगा दिया। ये समझ गया, मैसेज डायरेक्ट पकड़ लिया इसने। रूम का बोलो और बोलता लोबी कर लोबी कर लोबी कर। बंदा अच्छा है यार, पैसे ऐसे सपोर्टर होंगे तो फिर बंदा आगे ही निकलेगा। Welcome to PUBG Mobile. आजा बाहर आजा बाहर। चलो यार, बुराड़ में जाए मेरिट डिटेक्शन। मेरिट का हमें क्या करना है। रूम 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 रूम। बना सर जी नो प्रॉब्लम, नहीं आपके लिए हम हर चीज़ करेंगे। रूम रूम सब करेंगे। अच्छा क्या बना है, इन्वेंट्री क्या बना है बताएं। बंदे तो मेरे ख्याल से इन्वेंट्री में ज़्यादा आते हैं, तो एक काम करते हैं इन्वेंट्री बनाते, लाइब्रेरी बनाते हैं। आज लाइब्रेरी लाइब्रेरी मज़े वाली थोड़ी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। किधर गया ये वाइट डेविल? हाँ ये रहा। आ जाओ भाई आ जाओ, सारे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। ठीक है, रूम बन रहा है। Welcome to PUBG Mobile. I need a weapon. Let's go. First point for the red team. Excellent work. Enemy down! Excellent work. No mercy! Enemy down! The blue team is unstoppable! Excellent work. Let's go!
Okay. Expired! Reloading! Excellent work. No mercy! Cover me! Target down! Dead! Killing spree for the red team! Target down! No mercy! Target down! Enemy down! Reloading! Cover me! Excellent work. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. The red team doesn't have a lot of time left. Target down! No mercy! Killing spree for the red team! Excellent work.
Excellent work. Red Team victory! Excellent work. भाई मैं समझा कि दो की टीम बनेगी, लेकिन ये तो साली एल लग गए मेरे तो यार। अरे अबे मैंने मैंने 1v1 का 1v1 का बोला था, बोला था, तूने तूने किस 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 को किस को बुला बुला लिया। लिया। ओए शिट यार। चल तू चल तू खेल, खेल, साइको साइको के के साथ साथ भी भी आ आ रहा रहा हूँ हूँ तेरा तेरा खेल खेल के खेलने लिए। के लिए। ओके जी। आजा देर देर से। से नहीं यार, नहीं यार, वो वो सॉरी सॉरी चार्ज चार्ज कर कर लूं। लूं। बैल बैल बिल्कुल बिल्कुल 10% है, 10% है, वो वो चार्जर चार्जर थोड़ा थोड़ा पास पास से से लगा लगा लेंगे वो लेंगे, वो आ आ जाएगा। जाएगा। मैं मैं याद। याद। ओके ओके भाई भाई याद, याद, ठीक है, ठीक है, अभी अभी एक एक घंटे में आ घंटे में आ जाऊंगा। जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, 2 मिनट आ रहा हूँ पबजी में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 मिनट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ पबजी में, आ जाओ पबजी में। पबजी पबजी जो भी है सब्जी। अच्छा जी, साइको साइको भाई, साइको पता नहीं किधर होता है यार आजकल। किधर हो आजकल? स्ट्रीम नहीं देखते? साइको भाई आजकल स्ट्रीम भी नहीं देख रहा। साइको भाई, व्हाट इज दिस? साइको भाई स्ट्रीम देखा करो यार, हमें खुशी मिलती है। मैं बहुत कम खेलता हूँ। अच्छा, कम खेलता हूँ। ठीक 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 ठीक। अब नहीं तो देखो ना। अच्छा जी, जो जो न्यू है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आईडी लिखो, आईडी बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, लगाओ। हाँ बताओ, आईडी बताओ, आईडी। हम्म हम्म। आईडी बताओ, आईडी बताओ। जलवा है। माशाल्लाह। हाँ आईडी बता दें भाई, ताकि मैं रिक्वेस्ट भेज सकूं आपको। जल्दी बताते हैं। साइको भाई चले ही गए भाई, साइको भाई नहीं रहते भाई। कोई नहीं, आईडी नंबर बता दे मुझे, मैं लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह पकड़ गई हूँ यार। ना 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 ना। गाइस, जो जो न्यू है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तभी तुम्हारे को नोटिफिकेशन आए और तुम डायरेक्ट आ जाओ। ठीक है, डायरेक्ट। इतना सा भी आसना नहीं, वेट नहीं, डायरेक्ट आ जाओ। ठीक है, तो बाय 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 बाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अभी तक तो 1 घंटे की स्ट्रीम हुई है भाई, 2 बजे हैं अभी तो। 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4, 3-4 घंटे होनी है। 5 घंटे अल्लाह करे 5 क्रॉस मार दे 5 घंटे की स्ट्रीम। देखो आपका नेम क्या है? मेरे पे रिक्वेस्ट नेम क्या है? रिक्वेस्ट में देखो, एक सेकंड। रिक्वेस्ट कौन सी है? TX बॉय वाली है? कौन सी है आपकी? इब्राहिम लिखा होगा। अच्छा इब्राहिम, नहीं इधर तो कोई इब्राहिम वाली नहीं है, इधर नजर नहीं आ रही इब्राहिम की कोई। ऐप सर्च करो। अच्छा बताओ इब्राहिम सर्च करो। ये लीजिए इब्राहिम सर्च कर लिया। ये वाली है आपकी? हाँ, आप मुझे आईडी नंबर बता दें या वहाँ से कॉपी करके मुझे भेज दें। आपने रिक्वेस्ट भेजी तो आप मुझे नेम बता दें, मैं नेम जाके चेक कर लेता हूँ अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो। नॉट 69 बिल्ली। अच्छा नॉट 69 बिल्ली भाई, क्या है नॉट 69 बिल्ली? इब्राहिम भाई ये लड़के के नाम क्यों लगते हो यार? अच्छा नॉट 69 बिल्ली, इबली, सॉरी इबली है। अच्छा बिल्ली नहीं इबली, सॉरी यार, मैं समझा आप लड़कियों वाले नाम कैसे रख सकते हो यार। इबली, ये नहीं आ रहा। डबल आई रख देते हैं यार, क्या पता डबल आई में। नो नोप नोप इबली 4 है क्या? ये लो भाई 4 आई मुझे अभी भी नहीं। एक सेकंड मुझे देखने तो, आपने लिखा क्या है? IB 4 आई है ना? अच्छा मैंने गलत लिखा है, सॉरी 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 सॉरी। अब आ जाए नहीं। नोप नोप नोप, देखो 4 आई है, 1 2 3 4। इबली अब तो ठीक लिखा है ना मैंने? वेट भाई मैं गलती क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही यार। आप मुझे एक काम करें ना, आप मुझे कैरेक्टर आईडी दें, नंबर के होते हैं ना नंबर, या आप मेरे नंबर लिख दें सर्च में तो मेरा आ जाएगा। इसमें इबली इबली ये फिर आएगा नहीं डायरेक्ट। अच्छा एल नहीं है, अरे इब्बी बोल रहे हो यार। अच्छा 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 अच्छा, मैं इबली इबली पता नहीं क्यों, मैं असल में लेटा हुआ ना इसलिए मेरे को कैरेक्टर ऐसे नजर आ रहे हैं। सॉरी यार, सॉरी ब्रो सॉरी। इब्बी बोल रहे हो यार आप। ये रही भाई मिल गई मुझे, ये है आपकी? कंफर्म करके बता दें, ये है आपकी? इब्राहिम भाई ये तो है आपकी या नहीं? भेज रही हाँ ठीक है ओके, मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, आप आ जाए। अबे भाई क्या है यहाँ में, यहाँ क्या रहा है? मेरी तरफ से यार, भाई की तरफ से गिफ्ट है। बाइक्स नहीं तो मैं वो भी भेज देता।
है जी, आप ऑनलाइन भी हैं। अच्छा जी, आगे वेलकम बैक। इब्राहिम भाई आप हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं यार, फाइनली। फाइनली यार। भाई साहब आखिर आ ही गए। आ गया तू जवान होकर, ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छा जी, फाइनली फाइनली। रूम खेलो, रूम खेलो। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ इब्राहिम भाई, आ जाओ। बेअसर रही शराब बेखबर। चलो इब्राहिम भाई के साथ खेलते हैं यार थोड़ा। इब्राहिम भाई के साथ खेलेंगे आज हम रूम। क्या बोलते हो? इब्राहिम भाई किधर गए? बेअसर रही शराब। आ जाएं सर जी, आ जाएं। क्या हो गया? अच्छा अच्छा ठीक है, वेट कर। ओके ब्रो। अच्छा आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ था? ओके ओके, कर दो कर लो। बेअसर रही शराब। डन। ओके, आ जाए इब्राहिम भाई। ओके जी, 1v1 खेलना है। अबे भाई ये क्या है यार, फिर से मेरे 1v3 कर रहे हो मेरे साथ? 1v3 ना करो यार। अच्छा जी, बंदे आ रहे नहीं, आ रहे ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। रेडी हो गया, रेडी हो गया। ओ भाई साहब, भाई मैं तो थक गया यार। भाई 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 Welcome to PUBG Mobile. Team match. Let's go. इसके बाद करते हैं इब्राहिम भाई, इसके बाद करते हैं। रूम बहुत पड़े हैं यहाँ पे भाई। Match point for the red team.
Killing spree for the red team! Expired! The red team is in the lead. The red team is unstoppable! Dead! Reloading! Clear! Cover me! Reloading! Killing spree for the blue team! Reloading! Cover me! Expired! Be careful! You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Cover me! Welcome to PUBG Mobile.
Team match. Let's go. Blue team has scored for the first time! Reloading! Nice shot! Cover me! Target down! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Killing spree for the red team! Work. Reloading!
Half of the match is over, and the red team is in the lead. Cover me! Reloading! Nice shot! Cover me! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Reloading! Enemy down! Cover me! Reloading! The blue team doesn't have a lot of time left. Cover me! Reloading!
Team victory! अल्लाह बेहतरीन खेला है भाई, बेहतरीन, खतरनाक खेला है भाई, बहुत खतरनाक भाई। क्या है यार, मैं नूब बंदा हूँ यार, आपको पता तो है मैं नूब हूँ यार। देख लिया मेरी गेम, मैं ऐसे ही नहीं बोलता, सच में नूब, मैं ऐसे नहीं बोलता था, मैं सच में नूब हूँ भाई। ओ भाई, क्या ही बात है, बेहतरीन खेले हो यार, बहुत आला खेले, बहुत आला, लव यू। और जो जो न्यू है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, कर दो जल्दी। अब मैं बोलूं, आपने सर जी बोले, आपको किसने मत किया मुझे पता है। साइड में स्ट्रीम भी ऑन की हुई है, वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ बोलो। क्या क्या हाल है क्या? इमरान भाई, आपके खैरियत से हैं? तुम स्ट्रीम तो देख रहे होंगे मेरी। हेलो, हेलो। 2 मिनट, अभी मैं यहाँ से अपना ऑफ कर रहा हूँ। वेट वेट, मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहा हूँ। ओके ओके, गेम ऑफ कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या खेलना, अभी एक काम करते हैं, रूम लगाते हैं, थोड़ा सा रूम लगाते हैं, थोड़ा खाने का टाइम है मेरा, इस वजह से रूम बनाते हैं, आप रूम खेलें, और इंशाल्लाह मैं आता हूँ थोड़ी देर में, अभी आता हूँ 5-10 मिनट में, जब तक आप रूम खेलें थोड़ा, इब्राहिम भाई, ठीक है।
historically. Quickly after. Local from the top, playing on the eaves, trying to gargoyle and rain down from above onto the Infinity. For anything he can, I think he assumes God Tony's in this position, which is pretty smart of them, but Newsy and Logan both pushed off on their own. Hamzy G makes an absolute breakout of his own, still just running around, do-si-doing. Oh, that was an open broadside, but Oh my Kelsey God, still from the Kelsey! top rope. 1 and 2 drops down, still alive. Lone Ranger, God Tony now knocks that Hamzy. Will be able to find the knock onto Kelsey with just a tickle. Will lob the Molotov over, forces the fight close. Silas might feel the burn here, and underarm as well. Silas pushing forwards, wants to jump over, get that first knock. Kelsey low, but will find the knock, and the third goes through. S2G hold it out from the church. From the ruins, they dominated the battleground, and they will be able to find the chicken dinner. You can tell these lads are relieved as well at the end of that game. Not a huge celebration, but certainly all eyes are on Kelsey right now. What an unreal finish. And Hamzy G as well, I mean, at the end, that guy was insane. He had to go for that play where it was just so aggressive out in the open to actually make it happen so Kelsey could get that disgusting off angle over towards Newsy and Logan, who just left it too long to move out of the blue. Again, I said right at the beginning, this is sending up towards ruins, and S2G held 3 of the main compounds and slowly regrouped over time. I don't think Influence Kevin should have got where they did, but then again, they're just so good at the game that, you know, they're able to slip past undetected a lot of times. So very, very well done to them. Yeah, to get that laid into it is really good. I'm really happy with DRS's performance as well. You can see them on the teams to watch. It was, I think, a good game from teams that needed it all round to prove themselves. S2G, you're worried about them carrying that forwards, but it is a good start. Yeah, absolutely. I think for S2G themselves, it's that confidence boost that they need, but they also now need to not get too overconfident, which is what we saw yesterday after a pretty good start to their day 1. Influence Kevin, on the other hand, I think they're going to continue to put up points, and at this point in time, I feel like we can almost confidently say that we feel like they're going to end up in the top 3 and go straight through to the grand finals. They just seem to be head and shoulders above a lot of the players in this lobby. If they didn't at this stage, it would be a little bit of an upset. You do kind of expect it coming out from this Brazilian team. It is seemingly on fire. I'm going to be really interested to track their performance over the rest of the tournament as well when they come up against teams from the other groups. I think the Infinity as well is a huge one to talk about this game, getting that far into it and picking up themselves a second place. We said at the beginning that they need that big
A good day here for some of the teams that desperately need to start picking up points. S2G locking down 26 for themselves, Infinity locking down 22, and even DRS, who wasn't even looking terrible yesterday, get themselves 20. A fantastic match, actually, honestly, with the way things finished off. Max over towards Ruins, towards the cast position as well. S2G was holding. That was quite intense and I think quite methodical out of quite a few teams there. Yeah, I mean, I was a little bit scared, and I think Blank also during that cast, he was a little bit scared that SG might have rotated to get together a little bit too late, maybe a little bit too slow. They got back together. Luckily enough, Influence was not able to take down any of the players, so they remain as a 4-man team, and you really need a 4-man crew to hold down Castle. Sorry, not Castle, the church area of Ruin. So good execution on that side. And man, really, Calcigan on the rooftop play at the end was really what allowed him to get a good scope of that fight versus Infinity to close it off. And man, that push from Calci in particular, Sandstorm, really just locked things down for S2G. Yeah, it really was. And also him holding the high ground, or rather getting on the roof of the church in the very last seconds, that definitely helped him make sure that the team got the revives down, gave them enough time just to make sure that they secured that chicken dinner in a very much needed time as well. You guys at home, make sure to get your predictions in of who you think is going to win the next match over in the YouTube chat as we check in with our overall rankings. We're starting from the bottom this time, I think. We're starting with, obviously, the reason we wanted to show the bottom first is just to rub this into Sandstorm. R8, 16th place. I mean, they're 18 points behind your favorite team, Infinity, but Infinity actually did manage to do something this game, so it's nice to see them actually perform well and seeing consistency that we're missing. Well, that's the first game. If they continue that, so we can see the consistency, I guess. There we go towards the top. A big lead being built up here for Influence Chemin. Then again, Enigma Galaxy did go out within the first 3 teams, so that's why that lead is being built up. It's still 20 points, almost 30 points practically. Is a fantastic job here by the team from Brazil. But again, can they maintain it will be the question, as DRS has moved up now into 4th position. I mean, 68, 112, that there is quite the discrepancy between the two teams here. But, you know, then again, DRS, I can honestly say I did not expect them to have this kind of performance here in the group. And Max, you were even saying as well that you were kind of surprised too. A lot of individuals stepping up within that roster to really put on a good performance. Yeah, I think yesterday Killer's been doing some really good stuff, but today Delta in particular has really got himself some fantastic nades, some great pushes. They were super proactive too. Like, they wanted to make sure we have 100% control of the more western side, getting clear of teams such as MTech, Mad Balls, Box. Also, there was a great push on their spot. So DRS are taking full control of their fate in these games, and that's what we need from the team. You know what we also need, Max? More followers! More followers, yeah. Go hit up Honeymoon Esports on all those different platforms you can see on your screen. Not to mention even us, even all the talent, even all the players. Make sure you follow everyone except Sandstorm on the end, because that would just make things nice. You know what is nice though? That we are seeing a lot of the teams at the bottom of the table start to perform in these games. I like the fact that we saw a little bit of TQ as well, so I want to see them perform a little bit better though. Well, speaking of Delta, Max, you're going to see him in a head-to-head up against Calci. And Calci is one of your favorite players from Turkey, if I'm not mistaken. But look at this. I mean, the team contribution percentage, the damage as well. Obviously, you know, S2G in the position they're in are able to fire on quite a few different angles to maybe not necessarily able to lock down the limbs. But Delta, I mean, I think there was like a double nade. Was it him or someone else on DRS had up against Influence Chemin that like opened up the floodgates for them to hold that position? Yeah, that happened in the later stages. Also, they had an amazing push up against the compound of Box that I think was very important for them to get that kind of free real estate in the southern side of the circle. So really, as I said, they are willing to take control. I think that's something that was lacking with the previous DRS rosters in the past, in previous PMGCs. But man, they're willing to be aggressive, to go for pushes, to take control of these amazing spots in the circle. That is what we need to see from a team that's hoping to be in top 3 to go straight into the grand finals. But yeah, as you said, Calci, one of my favorite players from Turkey, and really here putting the numbers. 6 limbs, 1,127 damage. He really did make sure that no one was going to get close to that church in the finishing moments, which with this circle, and you mentioned it during that game, Jason, the circle center up in the middle. We don't usually see in the past circles go to phase 9, but if you have a central position like that, it is your game to win. Well, looking at I8, we also had a discussion while watching the match saying that they're not really performing as well as when Crypto was on the team, but obviously we know how strong Crypto can be. We got to see UZM there, Sandstorm, able to step up and do some decent work, but my question to you and maybe to their team is, do they have what it takes without Crypto here to be able to like fight in the raw mechanical skill you need to be able to take these team fights? And I don't know who on the roster would be the one to step up, or who would be the 2 to step up within the team.
Well, from what we've seen on day one, their best performance was a top 3 finish, 6 eliminations, and then the rest were bottom 4, bottom 5 finishes. Not the best performance, and right now I wouldn't even set my sights on a top 3 finish for the team. Maybe focus on getting to the survival stage, because we saw the difference between even 4th or 5th and 1st place. Absolutely massive. So now we have a battle on 2 fronts, a battle for top 3 and a battle for the survival stage. Set your sights on that, and then maybe use the 2-3 weeks break between I guess now on the survival stage. Take that time to VOD review, study the other teams, watch the streams, and then hopefully make a change in those few weeks that will allow you to get to the grand finals through the survival stage and through the last chance. Okay, well, our teams to watch, Maxman, you did quite well, I have to say. Sandstorm, I think, definitely came out the worst between you two. And we're going to see our teams to watch here on Miramar coming up next. And, well, you both have finally changed things up a little bit. Well, Max, you've changed things up quite drastically. And Sandstorm, well, you still kept one team around with LGD. But let's kind of talk through these picks. I'll start off with you, Max. BTR, Miramar. There's no Ryzen, though. So why'd you go with BTR? BTR. We need more points. That's all the reason I need, right? That's perfect. That's a perfect explanation. Really, as we know, like BTR has been looking like a really strong team in Miramar in the past. Of course, Miramar circles have been a little bit weird, especially that Impala circle, I believe it was yesterday, that was really rough. But I still believe BTR can pull the numbers over there. And I think Mad Bulls is in a very, very similar boat where we saw this team perform extremely well in the Championship and also Western Europe. So that's why these two teams, and also S2G, because they got a win. And I still want to test if I'm still cursing teams. That's why. Well, Sandstorm, you went with Buriram United Esports, and you went with Team Queso. I mean, LGD, we're not going to talk too much about that one. But why these two teams? Buriram Esports have been quietly, consistently showing up in every single one of the games that we've had. They've only had one 16th place finish, and then the rest were top 8s, top 3s, top 2s. So they're getting a lot of points, but on the down low. But the thing is, you can't really keep doing that and expect to end in the top 3. So I'm picking them now because I want to set my sights on them and see if they're going to change it up and try and see if they can fight for a top 3 spot, or if they're just going to focus on staying in the survival stage for now. And when it comes to Team Queso, I love the fact that we saw something special from them throughout this game. Maybe the zone didn't really help them out in the last couple of shifts. I guess it really went in favor of S2G. But when it comes to Team Queso, I want to see more of those shotgun plays, and somehow they bring it out in Miramar and it works. So I want to see that happen again. Well, with Team Queso, with Reyes in particular, I feel like he's proven yesterday and today you don't want to be in a vehicle coming towards him, because he will just wipe out your entire team, as LGD found out today. And I don't remember who the team was yesterday that found out over on Bridge on Erangel, because that's the one match I'm thinking of in particular. But yeah, I mean, Team Queso, they've shown they have some depth in the team. But again, the positioning, like we're seeing a lot of these zones compared to maybe the PMPLs we've been doing, stay more central. I feel like we haven't seen too many hard shifts so far in the event. And we're also seeing like teams who do get the early position are able to be rewarded. Like S2G, they had that spot pretty early and they were able to just hold on to it the entire time. Yeah, these new circle settings reward like both edge and central playstyles, because if you're playing central, you're still going to be in the center. We saw that work relatively well for, I believe it was Nigma Galaxy yesterday, where they just go center, circle comes their way, then they basically defend that spot. It worked out for S2G also in this game. And then you have Influence, where Influence came in just playing the edges of the circle, but it's not going to shift that far away from you anymore, so you have less effort to put to get in the circle every single iteration of the circle. So yeah, it doesn't really reward placement all the time. It more rewards like effective rotations and speed at which you kind of execute those rotations. So that's why you see those teams at the top being so consistent, because they adapted to these changes so well, and they're just looking great so far. Well, it did worry me though with at least S2G's playstyle of being center really early. It was, if we looked at their med sets from what we were talking about or watching, they didn't really have much of anything. So they were obviously not getting eliminations. They weren't running around looting for extra more. They weren't, rotating quite a bit. I feel like if they take any sort of extended battle, they're just going to eventually, bleed out. They're going to be easy to overthrow if you just slowly chip away at them. And I think that was the main reason why they decided to just instantly leave. Not even think about fighting Influence Chemin for control of the castle. They just wanted to get together in the church, because in that situation, if you have any knocks, you just get the revive, no heals. You don't want to instantly lose any player, and we saw what they managed to do at the very end. They just managed to pick their fights at the right place, at the right time, play on their own conditions, and that's what managed to get them the chicken dinner in the end. But you said it yourself. They took control around phase 3, I want to say, and they moved that around phase 7. So they stayed there for a very long time, and by the end they had maybe 3 first aids in total between the entire team. So not much that you can do there, but they still played it very well. And Max, you mentioned something actually during the last match with LGD. Now you didn't pick them, though you picked them almost every single game yesterday as a team to watch. Yeah. But they got 7 eliminations, so they don't really get necessarily high when it comes to placing.
But 7 elims is a good sign, because that's what I like to see, and I value in a team, teams that can pick up a lot of elims. So now as we head into Miramar here, we're going to throw it back to our Castos to get things ready to go here for match 2 of the day. Match number 2 on the cards. We're in for Miramar, of course. We are going back on over to the desert. Max said he wanted to see BTR step up here, and we've seen them do it before, but as Jason highlighted, without Ryzen this time. I mean, Ryzen's not been in the fold for quite some time now, John, so honestly, I don't mind it so much. I think you're looking at Luxie and Zuxi to maybe bring up the fold. They were pretty good on Miramar before, maybe they could be pretty good again. There is a fair few teams here at the moment that have found themselves absolutely blasting off on Miramar though, and I think for BTR there have been improvements made 100%. I don't think it's enough right now to send them just leapfrogging all the way to the top of the leaderboard just yet. But I'm excited for the rest of the PFGC nonetheless for this team. LGD looked pretty good on Miramar yesterday, been able to pick up that high ground position and play from there, effectively holding out 2 teams at the same time with just 3 players, which was impressive in of itself. And so far, I think that we're starting to see this change from a lot of teams at the moment, which is realizing we're having a lot more center circles. So once you get to that zone 3, you can kind of estimate where this circle is going to end now, which is amazing. And some of these absolutely key compounds within the center of the circle now become very, very important. And fighting over those compounds, it is hugely valuable to yourself. It's no longer a case of, right, do we want to fight over this compound if a team's already got it? Because it might hard shift away. That's not a case anymore. So we might start seeing some more heavy engagements and more priority control over some of these compounds. Getting warm and ready to get into those priority compounds. Hello. Hope you're doing good. Get back into the game. Oh, he just Infinity destroyed you. Oh dear, he's doing that for me. Oh dear. Yeah. You were like, hi, how are you doing? He was like, you're done for, unfortunately. Whoa, I'm not even playing. Yeah, come on, man. You can't do that to Mr. John Allen. That's very unfair. But yeah, either way, looking at a lot of these teams at the moment getting ready to head in towards these matches. Team Queso having a bit of a better game last match as well, which was good for them. Something they desperately needed. And before I was cut off by the highlights, because those are very important, I can talk about it now at least, is, you know, we did see the Infinity able to get themselves a large game, the last one getting a 2nd place, and we were talking about how, you know, they needed that big game coming into day 2, considering how far they were down on the overall leaderboard. So taking a quick look at where they're currently set, they're able to send themselves up into 12th place. Not quite safe as of yet, but only 2 points behind 10th and 1 point behind 11th, so there's stability. Mad Bulls scarily now on the edge. Plane path for Miramar of our first dose. A little bit further south from that east coast, up to the middle on the west. Cutting out, again, places on the north. We've seen that a couple of times so far. Torre Hamada quite far out of the way here. Wonder if teams will be making their way up there if the circle doesn't shift that way. Moving straight into the map now. Team Queso dropping down nice and early down towards Porta Paraíso. We're having Kengzo up towards that top side of the map as well. Power grid open. It's not hugely down towards the south, so there's still a lot of this area on the northern side that can be picked up. Mad Bulls going towards one of their backup drops down towards Los Leones, sharing that one with I8. Worked out kind of well last time, but this time I8 are surrounding, so it's no longer a case of being able to quickly move north here for Mad Bulls. They might have to struggle their way out of this, if not for the circle heading all the way down towards that south side, which is going to change things up drastically. Wow, okay, that is a really hard south shift. It keeps Los Higos Islands in. Could be quite an interesting dynamic, cutting out a lot of the major areas of this map. So teams that drop down towards the south are going to have to crunch themselves in on that south side as well. 4 rifles dropping in. Delta's got a UMP. Go on. Not the most long-range weapon, but you stick a 6x on it, you might be able to get something done. Bemburu gets a couple of holes sent in towards the parachute, but not much of anything else. You'll be able to get out of the dodge nice and easily. I don't think you're hitting these shots, son. UMP, typically your close-range weapon. It's very good at close range, but
might need yourself a DMR. They're popping shots back, and oh, okay, hang on a minute, maybe not. Happy just grabbing a buggy and getting away. Delta, I mean, if he had any other weapon there, you know, give him an M4 and that's 3 dead players easily. I mean, 100%. He was directly on target. And I mean, he had the 6x, so the M4 could have been absolutely influential, getting those couple of knocks. And 4 Rivals could have seen themselves with a very bad start to their Miramar here. Unfortunately, slipping far down the rankings so far. 4 Rivals with what was a fairly decent start to there yesterday. Again, only 2 more days remain for Group Red to sort itself out, find exactly who's going through to the Grand Finals and who will be going home. But I think for Influence Kevin, it's pretty much set in stone here. 112 points, second place at 83 is an unreal differential in terms of point scoring, but does make a lot of these lower positions on the leaderboard much more volatile. I mean, you can see that from 6th down towards 12th is really only looking at 18-point gap at the moment, which is quite intense, kind of insane actually as well. So I'm looking forward to seeing what happens on that final day. Should we continue to see some of these top teams remove a lot of the points from the lobby? S2G put themselves in a much safer position in 6th place now at 56 points after their previous chicken dinner. Overall, happy days for them. 4 Rivals gathering up the vehicles on the north side. If you're going to invest time getting this far up north on that plane path, you are going to have to be very, very mobile for this south circle hard shift. So they'll be looting up for the meantime after they've escaped the purview of the 6x UMP. They'll be all right. Titans, not seen too much out of these guys so far. I mean, yesterday they were absolutely blasting out their mind. They were looking very good, super aware of all of their surroundings. But last game and last couple of games from yesterday, less than ideal for them, I'd say. So maybe need to pull up. हेलो 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 भाई, आ गए भाई, आ गए यार। तो खाना खा रहा था थोड़ा इस वजह से, असल में थोड़ा इस वजह से। अच्छा जी, सबको वेलकम है भाई फिर से। यस, ये कब ख़त्म होगी? क्या हुआ? हाँ भाई, क्या हाल है? कहाँ चला गया था? खाना खाने। अबे पबजी खाना भी खाते हो? वाह भाई, खाना खाना आ जाता है आपको? अभी बोले बच्चे हो आप, बच्चे खाना नहीं खाते। वो अंग्रेजी में बोल रहा था PMLN। सबर, हाँ थोड़ा ऐलान है इधर, एक सेकंड। नहीं यार, एंगल लगा ले। देवी की स्कोर में लगा, स्कोर में लगा, नहीं खेली जा रही।
Welcome to PUBG Mobile. It is showtime! We will be taking off soon. Be prepared. आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी न्यू है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो जिसको ये समझ नहीं है कि PMPL क्या लगाया है, जो भी है PMLN, ये इसी मैंने इसी लगाया था ताकि जो तुम देख रहे हैं वो भी इंजॉय कर पाए मैच, और मेरा भी काम हो गया खाने पीने का। ठीक है, मेरा काम हो गया खाने पीने का। बीच में मैं अभी क्या बता नहाने भी अपना पूरा हगने वगने का सब में PMLN लगा दिया, तो नाराज़ मत होना भाइयों, ये भी एक मैच का हिस्सा है। अब ऐसे नहीं समझना कि PUBG वालों ने स्पॉन्सर किया है, घंटा को स्पॉन्सर करेगा, कोई मुँह भी नहीं लगाएगा भाई हम जैसे नहीं। मैं आ गया, हाय हाय हाय, क्या बात करती यार, खतरनाक बात करती यार, मैं डर गया। यकीन मानो यार, बंदे हैं। नीचे ही गिरा लानत हो, समझो ऊपर यार, ऐसे टाइम पर ही लग। आप अभी तक बैठे हो यार, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैं आवाज़ कम कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप अभी तक बैठे हो यार, मैं इसके में वैसे गलत की बात है, कोई देखता नहीं है। आप मैं क्या बोलूँ यार, अब मैं आपके लिए गिव अवे करता हूँ यार, यूट्यूब बोलो करवा देता हूँ आपको इंशाल्लाह। मैं बोलता हूँ अभी हम रूम वैसे भी करेंगे ना संडे को, मेरे ख्याल से मैं गिव अवे अनाउंस कर दूँ। मैं 1K पे गिव अवे अनाउंस करूँगा, क्योंकि समझा करो ना 1K वैसे मैं नहीं कर सकता ना, तो पूरी एक साथ मतलब पब्लिक आ जाए तो इंशाल्लाह गिव अवे अनाउंस होगा इंशाल्लाह। मैं इसी ये तो वहाँ चला गया। बस आपका ये सपोर्ट का जज्बा देखना चाह रहा हूँ कि आप मुझे कब तक सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको सबसे पहले यूसी दूंगा इंशाल्लाह। भाई का ज़िंदगी रही तो ज़िंदगी पता नहीं। I need a muzzle. नो वरीज यार, आप बहुत बेहतरीन खेलते हो, आप जैसे बंदों को यूसी की ज़रूरत है, हम जैसे बंदों को नहीं है यार। मेरी तरफ से गिफ्ट फिलहाल मैं देखूँगा, वेट करूँगा पब्लिक आए, फिर इंशाल्लाह आपको भी आपका मैंने नाम याद रखा, नाम क्या मैंने लिख के रखा।
जो भी न्यू है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि रोज़ जो स्ट्रीम होती है उस पर आप ज्वाइन हो सको और हमारे साथ रूम खेल सको। बहुत ख़तरनाक इन्फिनिट सपोर्ट फॉर मी। ओके ब्रो, लेकिन यार आपने जो अंग्रेजी इन्फिनिट वाली बोली है ना मुझे वो समझ नहीं है। थोड़ा स्टार्ट कर देना बताते हो इतनी भारी इंग्लिश नहीं बोल सकता नहीं भाई, थोड़ा वो आजकल पिस्तौल से बहुत खेल रहे यार दिमाग ख़राब हो गया। कॉलेज यार मैंने जल्दी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने रात को काम ली थी। मैंने गार्डन को बोल दिया भाई हो गया जालिम। Watch out! Watch out! नहीं मर जा रहा है। मेरी गेम Awesome! 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 Let's go! Let's go! Let's go! गलत कर दिया। एक सेकंड में पढ़ता हूँ सब। नहीं तो नहीं है। एनिमी है कोई नहीं, ऐसा पढ़ लेते हैं हम। इन्फिनिट सपोर्ट फॉर मी आपने पता। फ्रॉम मी, फ्रॉम नहीं फोर नहीं, फ्रॉम फोर नहीं फ्रॉम, आप गलत पढ़ लिया। इन्फिनिट सपोर्ट फ्रॉम मी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू इब्राहिम सर, थैंक यू। हम आपके चरण को छूना चाहते हैं। आपके चरण कहाँ हैं? आप मुझे बताइए आपके चरण कहाँ हैं भाई। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। एक सेकंड में दूसरे मोबाइल से चेक कर लूँ क्या क्या है स्ट्रीम में क्या इशू है भाई, चेक करते हैं।
अच्छा जी, हाँ सॉरी यार, ये गेट नहीं कर पाया। मैं आ रहा हूँ। अच्छा मैं यार, मैं अभी Let's fight together. Good luck, mate. सॉरी यार, बहुत मांग रहे थे यार, मैं ही करूँ। ये समझे यहाँ पे मैं आपकी तरफ बेफजूल बेकार नहीं है। ये नए दौर के दिखते हैं, बस वफादार आवाज तेज। We will be taking off soon. जरूर आगे मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं मैच रुकवा देता आपके लिए, लेकिन अब खैर कोई नहीं। चलो फिर मैं एक सेकंड। I'm really sorry. Fall Enemy back. down. Not a problem. Let's go! There's an ambush. Play it safe. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear. Except for mine. Ha! Let's get this show on the road! अरे भाई ये क्या सीन है? अबे भाई ये क्या सीन है? तेरी फैन कभी कभी धोरा पड़ जाता है मेरे को यार, थोड़ा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो जो भी न्यू है स्ट्रीम पे, ठीक है। नहीं किया तो कर दो, नहीं तो बहुत अच्छा होगा। इब्राहिम भाई आपको नहीं बोलना, ये जो बंदे देख रहे हैं ना उनको बोल दो, ठीक है। आप सुना लो लेजर्ड वाली स्किन। मेरे पास कहाँ है लेजर्ड वाली स्किन यार? M4 की बात कर रहे हो ना? अच्छा मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना? नंबर 3 के L लग गए, मैच में है। अच्छा मैच में है, ओके ओके। भाई जो दो बंदे देख रहे हैं, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। Please recall me. Excellent work. चलो मैं इसको रिकॉल करके आऊँ।
I'm recalling a teammate. Please recall me. Got it. Got it. Let's go! चार्जिंग मोड ऑन किया हुआ मैंने। भाई चार्जिंग कर दिया है मैंने, ताकि मैं 7-8 बजे तक से इंशाल्लाह निकाल दूँ। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैं PMPL जा रहा हूँ, फिर से ब्रेक ले लूँ क्योंकि मैं नहाऊंगा अभी। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है? थोड़ी देर की बात है। अभी नहीं जा रहा, ये बात है। 7 से 8 घंटे, जी 7 से 8 घंटे इंशाल्लाह। 7 से नहीं 6 घंटे, 6 घंटे के लिए जाएंगे क्योंकि अभी हो रही है 2 घंटे 34 मिनट और 6 घंटे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6। Let's go. Let's go. Let's go. मैं भाई मेरी गेम एक डाउन चलो। डिजर्ट वाला सच में आया मेरे को। Awesome. Awesome. Thanks. Thanks. Awesome. 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 हाथ ही तो लगा रहे हैं हम।
जटिया है ये बेचारा खुद गरीब से है मारा किधर से इसको मुझे ना ऊपर चढ़ा हुआ है कि ये वे भाई Marked a location. Marked a location. Excellent, excellent work. मेरी क्रेट में कोई हाथ ना लगा अगर मैं मार दूं तो Awesome. 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 कोई बचाएगा Excellent, excellent work. बंदा आ रहा है कहां पे आ रहा है थैंक यू यार थैंक यू मेरा माइक ऑन है ना नहीं मेरा माइक तो कुछ और देखा ना यार क्लच नहीं बोल चलो मेरी क्रेट तो कितने भी आ सके इधर कितने मेरी गेम कितनी भी हाथ में देख मैं पहले ही बता रहा हूं ये वाइट डेविल की ये नहीं है भाई तेरी ये रही Watch out! 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 मैं क्रेट यार ये नंबर नहीं नेट पे मुझे पहले जाने के लिए मारो अबे मुझे क्यों मौली मार रहे हो हम साथ में मर जाएंगे What is this? मैं छोड़ूंगा Awesome. Awesome.
एक सेकंड गाइस, ये वो अपना ब्रास का पार्सल आया। Marked a location. रिसीव कर लूं। एक सेकंड में आया, ब्रास का पार्सल रिसीव कर। Help! 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 Watch out! Awesome. علمها
their socks just a little bit. Again, they are far ahead and away of a lot of other teams, but I do think this is a team with a lot of potential to keep performing, to keep scoring on those big matches. We just haven't quite seen as of yet. With this circle, though, I mean, I talked about key priority compounds, but with it down towards the western side of Los Leones, depending where the second and third zone go, which have like probably the most variability at this point in the game, you know, you could see a finish where you're down towards the south side of Chumacera, where you're picking up again some of those massive high ground mountain positions over even towards La Triera, or we head over towards Los Leones and we have ourselves a very funky little urban finish, which, you know, I don't think a lot of these players will be looking forward to. So right now, teams should be both investing in vehicles as well as smokes, because smokes for Los Leones are so important for crossing those roads late game. They really are vital. Really can't go without them. Top of the hill, MTech Storm, Team Queso. A little bit further down, this is on the south coast. Ayala, the furthest forwards on that rotation, as the rest of Team Queso are caterpillaring back up to regroup. Close towards most of the team from MTech Storm there. With this hard shift as it is, they will be playing on their south side high ground. Zurich nabs himself a party bus there, but could quite easily be taken out the back of it. Monkey's moving up as well. Everyone's got a party bus on the side of Mad Bulls, apparently. Trying to pick themselves up some heavy ordnance in terms of the vehicles themselves. So very nice and safe. But Reyes got this 1-2 punch going on from either side. Bit of a crossfire going on. Screams also setting himself up in a decent position. And no compound available. So Mad Bulls do the only thing they can do, which is to isolate one of these players. Effect going down, though, is bad news. And Ayala has the auto shot. Oh, goodness me. Does get taken down in response. Skills's moves through. They can look for these reses with Team Queso setting up such a wide crossfire. It does mean that they do have the opportunity to pick both of these players back up. Effect, though, under fire from MTech Storm, who have looked over this way. They've turned their attention out after the shots start to pop off. Team Queso's position is known. So is Mad Bulls on the south coast. Mad Bulls, by the way, a team now in 11th place. Very uncomfortably close towards that elimination bracket from the team that was the beacon of consistency over in the European Championship. This is a slip. Absolutely, John. I mean, it's a huge turn of events for Mad Bulls. I don't think they're used to being this far down in the rankings either. Looking at them, though, realistically, I think that's a great position to take on the map, and a quick split-second decision to immediately head towards Ayala. It's kind of unfortunate there is like basically 3 teams over in that area looking down towards them. But because they're able to regroup, that is one of those key compounds around this area of the map. Has a lot of good sight lines over towards so many rotational paths, and difficult to crash if you have 4 players within those 2 spots available. Bit more difficult to hold on to if you're just Ayala on your own, but again, overall, a pretty good hold from Team Queso that just goes slightly awry because the players are not there to support. Yeah, a little bit too far apart, maybe, or... You're right, there just wasn't quite the backup to support Ayala's position, which is unfortunate, but they still stay alive with 3, so they've still got a fair shout into this one. Quite a few teams yet to make that south migration. Enigma Galaxy, Freak still on foot, up towards the north in El Pozo. Wow, okay, that is another south shift blank, all the way over towards LGD. Yeah, I mean, this could even be heading down towards Los Higos, and realistically, with this one starting to now center up just a little bit, you're going to start to see a lot of these teams maybe thinking about heading down towards Los Higos, maybe holding out there for a long while to give yourself some extra support. Mad Bulls, don't think twice about this one and try and get ahead of the pack here, seeing Budoram also trying to rotate through. Obviously, Mad Bulls are able to pick themselves up a lot of vehicles early on, also loot the entirety of these compounds. Effect left slightly high and dry. I wonder if that buggy had one of the vehicles' wheels shot out, in which case it's kind of a null point for him. Okay, so spot Budoram, but it is traded off. Papi Potro, again, isolated from the rest of the team. Will be difficult to get him back up. They'll have to invest quite a lot of time and effort into getting that position back. But the saving grace is that they get that knock back over towards Budoram, who again are going to have to head out west. Do they commit the time to going for this flush?
My Bulls moved only slightly forward, finding them a position inside this singular compound. Now versus DRS, who historically today had really good impact into this one. Zerich has a nade that he might be tossing up topward side, but there's too many players here, and it's very unlikely Mad Bulls will be able to bring Zerich back into the fold. Skillz is trying to hold that position, but huge amount of impact this high ground is having for DRS at the moment. IA also looking down towards this spot. It's going to be difficult. Delta in such a pivotal position for the team as well. It looks a bit exposed, but the cover afforded by the bonnet of the pickup, really important. Thread the needle there, but they're not going to be able to get him back up. They just want to speed up the process of getting Zerich out of the game. Remove him as a information gathering point as well, which is really, really powerful, actually. When you're down, you can still feed that information back over. So finally getting that elimination will prevent them from scouting out any of those rotations. A nice knock on the long range from Skillz onto Rules. A really tough game overall. It's getting even tougher as well, just purely because of these central circles, in which case you're seeing much less edge play now. So many more teams clumping up towards singular destinations. So you're seeing I8 also over here, DRS looking down towards Mad Bulls. And yes, they have the compound, but they also have one of the lowest grounds in the lobby on this eastern side. They're able to find at least one player and take out that sneaky player from DRS that was trying to wrap his सॉरी भाई लोग यार, वो दराज का पार्सल उठाने गया था, मैंने मंगाया था। ओ भाई, हेलो 718। एक सेकंड, 1 सेकंड। ये कितने हुए? 268। हटा उसको। अच्छा 268 हो गए। ये 718 रुपये। वही हो गए, 1000 रुपये ही हो गए। पैंट चलो यार, उसको अनबॉक्स करें। अनबॉक्सिंग। पीस कैसी है? Okay. बेहतरीन है यार। दूसरा ऑर्डर चेक करते हैं। दराज से ऑर्डर मंगाया भाई, ऑर्डर। चलो एक सेकंड, तुम लोगों को वेब कैम से बता देता हूँ यार, तुम लोगों ने क्या किया। अब फ्रंट बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, नज़र आ रहा हूँ मैं? सही है यार, लाइट नज़र नहीं आ रही। खैर कोई नहीं। ये लो भाई, दराज का लाइट नज़र नहीं आ रही है दराज का। बाकी ये मैंने अंगूठियाँ मंगाई थी, ये नज़र आ रही है ना। ये तो परफेक्ट निकली है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं वो परफेक्ट है या नहीं है। बिस्मिल्लाह। वो थोड़ी महंगी है, 700 रुपये है। ये तो चलो 200 रुपये की चीज़ है। ये चीज़ मंगाई थी मैंने, घड़ी अपने लिए। चलो चेक कर अच्छी है या नहीं है। अब बेकार हुई ना,
लानत हो वैसे फिर कभी दराज का मुंह भी नहीं देखूंगा मैं दूसरी दफा मंगा रहा हूँ अच्छी चीज लगी इसमें मंगाई ये देख रहे हो मतलब मैंने घड़ी मंगाई है 320 है टच लगा लो अच्छी है यार माशाल्लाह अच्छा इसका चार्जर होता ही नहीं है सही अच्छी है अच्छी क्वालिटी मंगाई है डाउनलोड कर लो मीरामार डाउनलोड अच्छी क्वालिटी है वैसे यार अरे क्रिकेट लगाओ सही है मीरामार में हाँ कराची क्रिकेट हो गया उधर इसकी तो सेटिस्फैक्शन ये लगे भाई अभी ऑन कैसे होगी साली ये तो हमरे को पता ही नहीं है ऑन कैसे होगी शरीक कराकिन डाउनलोड कर अरबियों से डाउनलोड भाई चलो कैमरा बंद कर रहा हूँ भाई मेरा तो सर खराब है यकीन मानो अभी ऑन कैसे होगी साली बोलते हैं 2 में लागू हो जाती है कैसी तेरे पास डाउनलोड है मीरामार अरे मीरामार वडो है डाउनलोड तो किए यार क्रिकेट सही है क्रिकेट ले इसमें भाई यार कुछ हो नहीं जाए इसमें ही लगता है ना नहीं भाई चीज़ थोड़ी महंगी है तो वैसे ही चेक कर सकते ना लगा यार स्टार्ट हो गई लगा स्टार्ट हो गया ठीक है इतने भी वो नहीं जितने में समझ रहा था ये तो रियलिटी होती है भाई दराज बहुत लूटती है भाई इनके मथे लगोगे लूटेगी तुम्हें अभी चालू कैसी होती है ये मुझे नहीं समझ आ रही ना ये तो ठीक है कोई मायने है कोई बोला ये समझ नहीं आ रही इसमें कहीं आगे पीछे लिखा हुआ नहीं क्रिकेट लगा यार क्रिकेट लगा टाइमिंग भी एक्स्ट्रा कौन सी है वो तो बम कैसे आए हैं जो टाइमिंग पेमेंट का पोस्ट आती लो टीडीएम लगा करो अरे वो तो बना रहा हो अरे टाइम लगी है टीडीएम लगा तो वाटरप्रूफ चालू कैसे होगी तब इसको देखूं मैं स्मार्ट बोर्ड को कैसे पावर ऑन होगा ये तो पास है भाई ये तो पास है 220 में मिले भाई Team match. Let's go. एक सेकंड How to on smart bracelet Point for the red team. अबे ऑन कैसे करना है भाई जंगल रूल नहीं है अरे गर्मी से मेरा हाथ बुरा हो गया एक सेकंड
ज्यादा खास नहीं है। Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Excellent! Watch out! Watch out! Killing the blue team! Excellent work! Watch out! Watch out! Excellent work! Excellent work! The blue team is in the lead. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Mark the location. Down! Cover me! Fire! Cover me! Reloading! Down! Watch out! Watch out! Watch out! यार भाई हम स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। माजरत के साथ बंद करनी पड़ रही है मुझे, ऐसे करना तो नहीं चाहता था, करना नहीं लिखा हुआ था कि मेरे चल नहीं वो तो बाकी तो ये समझ नहीं आ रही भाई। कितनी हो गई है? कितनी हो गई है मैं चेक कर लेता हूँ।
या 4 घंटे करनी थी लेकिन नहीं कर पाया, माजरत के साथ, माजरत। ठीक है, आज की स्ट्रीम में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए मुझे, और मैं ये थोड़ा दराज को इधर क्लेम कर लूँ, तो तब तक इंशाल्लाह मिलते हैं कल।